Hello kids, welcome back to our English class. So today we are going to revise the lessons we learned in our previous year or previous standard. आज हमने जो lessons last year में पढ़े हैं उन lessons को revise करने जा रहे हैं, उनका revision करने जा रहे हैं. So we will start with the first poem, that is All Things Bright and Beautiful. This poem we have already learnt. We have already learnt this poem last year. And this is written by whom? Cecil Alexander. Cecil F. Alexander. इस poem को किसने लिखा है? Cecil F. Alexander. Okay, do you remember this? I hope you do. So this poem was about all the things that are around us, which are bright and beautiful. All the things that God has given us, which are bright and beautiful. In fact, everything that is around us is beautiful. Okay, so we learned that in this poem. So along with this poem, we will also revise the new words that we learned. So what were those new words? First one was creature. Creature means living being. Creature means living being. Glowing means shining. Glowing means shining. Wonderful means amazing. Wonderful means amazing. Pleasant means enjoyable. Pleasant means enjoyable. So these are the words that we learned last year. Creature, living being, the thing which is living. Glowing, shining, जो shine करता है. Wonderful means amazing, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा. Pleasant means enjoyable. Pleasant means enjoyable, जिससे हमें बहुत ही खुशी मिलती है, शांति मिलती है, ऐसी चीज़. Pleasant, enjoyable. A pleasant thing means enjoyable thing. So before learning this, we will read it once. Okay, so I will read slowly. What you need to do, you need to repeat after me. Okay, so all things bright and beautiful, all creatures great and small. All things bright and beautiful, all creatures great and small. All things wise and wonderful, the Lord God made them all. Each little flower that opens, each little bird that sings. He made their glowing colors, He made their tiny wings. Right? The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. The cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, He made them every one. He gave us eyes to see them, and lips that we might tell how great is God Almighty, who has made all things well. Okay, so we will learn it now. And who has written this poem? Cecil F. Alexander. Okay, so look at this picture. What can you see here? You can see here birds chirping. You can see sun. You can see beautiful nature, mountain, tree, river, tree, fruits. And what all you can see? Flowers, garden, nature. So you can see that these all things are beautiful. These all things are bright and beautiful. And these are made by whom? ये सब जो आप चीज़ें देख रहे हैं, look at this picture. ये पिक्चर में देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है. Birds, sun, mountain, tree, river, fruits, flowers, garden and many things are there. बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें दिखाई दे रही है जो कि बहुत ही क्या है, सुंदर है, बहुत ही अच्छी है.
और इसे किसने बनाया है? लॉर्ड गॉड, भगवान ने बनाया है। इन सब चीज़ों को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। सो इन सब चीज़ों की तारीफ़ों में ये पोएम लिखी गई है। So here, all things bright and beautiful, all creature great and small. हर वो चीज़ जो ब्राइट है, जो ब्राइट है, जिससे रोशनी आती है, हर वो चीज़ जो ब्यूटीफुल है, बहुत ही सुंदर है, उसे किसने बनाया है? लॉर्ड गॉड, भगवान ने बनाया है। ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, क्रिएचर्स मीन्स लिविंग बींग, लिविंग बींग मीन्स जीवित चीज़ें। सो ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, हर वो जीवित चीज़ जो छोटी है या बड़ी है, चाहे वो पक्षी हो, प्राणी हो, इंसान हो, हर एक जीवित चीज़ को किसने बनाया है? लॉर्ड गॉड, भगवान ने। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, हर वो चीज़ जो बहुत ही वाइज है और वंडरफुल है, होशियार है और बहुत ही अच्छी है, उस हर चीज़ को किसने बनाया है? The Lord God made them all. Who made them all? The Lord God made them all. इसे भगवान ने बनाया है। सो हर वो ब्राइट एंड ब्यूटीफुल चीज़, हर वो क्रिएचर जो स्मॉल हो या ग्रेट हो, हर एक क्रिएचर को, हर एक चीज़ जो वाइज एंड वंडरफुल हो, उसे किसने बनाया है? लॉर्ड गॉड, भगवान ने बनाया है, राइट? सो दीज आर द थिंग्स which Lord God made. There are many other things that Lord God made, and those are, see here, keep reading. Each little flower that opens, each little bird that sings, He made them, He made their glowing colors, He made their tiny wings. So, each little flower that opens. See here, you can see a flower picture. Each little flower that opens. हर एक फूल, हर वो फूल जो यहाँ पे आपको खिला हुआ दिख रहा है। Each little bird that sings, हर एक पक्षी, हर एक पंछी जो यहाँ पे सिंग कर रहा है, गा रहा है। He made their glowing colors, he made their tiny wings. So इन फ्लावर्स को, इन फ्लावर्स के कलर्स को, इन बर्ड्स को और उनके सुनहरे पंखों को किसने बनाया है? लॉर्ड गॉड। Lord God made them all. The purple-headed mountain, the river running by, the sunset and the morning that brightens up the sky. See here, you can see mountains here. So these purple-headed mountain, यहाँ पे जो mountain है जो purple दिख रहे हैं, उन mountains को किसने बनाया है? Lord God. The river running by, ये जो नदी दिख रही है जो यहाँ से गुजर रही है, उसे किसने बनाया है? लॉर्ड गॉड। द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स अप द स्काई। सनसेट, सनसेट कब होता है? शाम में, इवनिंग। सन सेट्स इन द इवनिंग एंड सन राइजेस इन द मॉर्निंग। तो सनराइज और सनसेट किसने बनाया है? द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल। द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स अप द स्काई। जब सनसेट होता रहता है और सनराइज होता रहता है, तब क्या होता है? The sky brightens, right? So these are the things that Lord God made. So what are the other things that Lord God made? The God made the cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden. He made them every one. So winter is a season, summer is also a season. So winter season में क्या होता है? Winter season में मौसम कैसा रहता है? वातावरण कैसा रहता है? बहुत ही ठंडा रहता है। In winter season you feel very cold, right? You feel very cold in winter. So the cold wind in the winter, जो winter में ठंडी हवा रहती है, and the pleasant summer sun,
समर में क्या रहती है, धूप रहती है. So the pleasant summer sun, the ripe fruits in the garden, he made them every one. So what God has made? These all things including cold wind in the winter, the pleasant summer sun, the ripe fruit in the garden, he made them every one. Each and everything is made by Lord God. So now, the last stanza. He gave us eyes to see them, and lips that we might tell. How great is God Almighty, who has made all things well. He gave us eyes to see them. Who gave us eyes to see? What? Lord God gave us eyes to see all these beautiful things. Who gave us eyes? Lord God. हमें आंखें किसने दी हैं? हमें किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है. सो भगवान ने हमें आंखें दी हैं ताकि हम ये सब सुंदर चीज़ें देख सकें. एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, उन्होंने हमें लिप्स दिए हैं जो ये बता सके कि हम कितने थैंकफुल हैं. हाउ ग्रेट इज ऑलमाइटी हु हैज़ मेड ऑल थिंग्स वेल. सो God has given us eyes to see all these beautiful things, and also he has given us lips to tell how great is God Almighty, who has made all things well. So kids, this was about the poem. Okay, now we will learn about prefixes. Okay, so we have already seen these examples. Now, what is a prefix? A word part added to the beginning of a word is called a prefix. What do you mean by prefix? A word part added to the beginning of a word is called as prefix. एक word के पहले अगर हम दूसरा एक word लगाते हैं, a word part added to the beginning of the word is called a prefix. एक word के पहले हम अगर एक दूसरा word part add करते हैं तो उस word part को हम क्या कहते हैं? Prefix. So see here, we have already seen these examples. Happy, add un to it, it will become unhappy. Kind, add un to this word, add this prefix un to kind, it will become unkind, right? And now equal, now add a prefix un to this word equal, it will become unequal. Next one is lock, now add prefix un to lock, it will become unlock. Fit, now add prefix un to it, it will become unfit. So see here, read this word happy. इस word का meaning क्या है? Happy means खुशी, खुश रहना. When you add this prefix un to this word, it will become unhappy. This is happy and this is unhappy. Unhappy means ना खुश रहना. See, he is looking sad. He is unhappy. He is unhappy. Kind. Kind means अच्छे से किसी के साथ बर्ताव करना या फिर किसी के साथ नम्रता से रहना. Unkind. Unkind. See, this man is being unkind to his dog by hitting it. Equal. Saman. When you add un prefix to it, it will become unequal. See, here you can see it is unequal. Lock. When you add un to lock, it will become unlock. Lock, unlock. Fit, unfit, जो fit नहीं है, right? So write 5 words other than the ones given above the prefix un. So I'll give some more examples.
in a picture. But now let's see some other prefix. Join prefix this to the main word, write the new word, use the new word to complete the sentence. Okay. Now see here, you can see some words here. Now we need to add this prefix, and this prefix is this. Here we had a prefix and here we have this. Now we need to add this prefix to these words. अभी हम ये this क्या है, ये एक prefix है. Prefix एक word जो दूसरे word के सामने लगाया जाता है, right? So this ये prefix को हमें ये words के सामने लगाना है. So we will get a new word. हमें new word मिलेगा. Connect, disconnect. Connect करना means जोड़ना. Disconnect करना उस चीज़ को निकालना. या फिर कनेक्ट का ऑपोजिट, ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट. ऑनेस्ट रहना, सच्चाई से रहना. डिसऑनेस्ट, ऑपोजिट ऑफ इट. ओबे, किसी की कुछ बात मानना. ओबे, डिसओबे. प्लीज, डिसप्लीज. प्लीज करना मीन्स किसी को खुश करना. डिसप्लीज मीन्स ना खुश करना. क्लोज, बंद करना. डिसक्लोज, किसी चीज़ को एक्सपोज करना, लाइक disclosing your secrets. Now we have added these words with the prefix in these sentences. Now so see here, do not dash your parents. Do not dash your parents. Do not disobey your parents. Do not displease your parents through your bad behavior. Immediately disconnect that burning wire. Raj is a dishonest boy. Do not disclose your secrets. No, so see here, disobey means किसी की आज्ञा का पालन ना करना, किसी की बातें ना सुनना. So here the sentence is do not disobey your parents. आपके जो पेरेंट्स बोलते हैं उस चीज़ को मना मत करो, disobey मत करो. Do not displease your parents through your bad behavior. अपने पेरेंट्स को अपने बैड बिहेवियर से, बुरे बर्ताव से डिसप्लीज, नाखुश मत करो. इमीडिएटली डिस्कनेक्ट दैट बर्निंग वायर. वो जो बर्निंग वायर है उसको जल्दी से डिस्कनेक्ट कर दो, निकाल दो. राज इज़ अ डिसऑनेस्ट बॉय. राज इज़ अ डिसऑनेस्ट बॉय. राज एक ऐसा लड़का है जो डिसऑनेस्ट है, सच्चा नहीं है. डू नॉट डिस्क्लोज योर सीक्रेट्स. हर किसी को अपने सीक्रेट्स मत बताओ. So these are some prefixes. I will give you some more examples of words with the prefix an and with the prefix this. Okay. So kids, this is enough for today's class. We will learn few more things in the next class. Okay. So till then, what you need to do, you need to study well and take care.